अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी मुश्किल है, सब US UK प्लान कर चुके हैं अब तक, बट ज़रा सनम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी। सारे मेल अपने स्टूडेंट्स से माजरत के साथ, आई वुड बी रियली फोकसिंग दिस टॉक टू इंक्लूड दोज 40% डॉक्टर काशिफ शाज़ली मेंशन, वो 40% बच्चियाँ जो शायद MBBS के बाद वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन पाती। So my talk will be focused on our journey in MBBS and beyond. ये HEC का जो हमारा जो प्राइमरी HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, ये उसका पाथवे है। ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी वेबसाइट पे बहुत आराम से मौजूद है बच्चों। So basically this is just an outline of what can be done and how can you pursue. There are two pathways, clinical and non-clinical. Clinical pathway आपको डॉक्टर बनाता है and then you can pursue a career into the clinical medicine. Non-clinical pathway are for those people who do not want to stay in medicine. So I'll be focusing a small slide on the scope and what is needed to be done. ये again एक पाथवे है कि आपको क्या चाहिए होता है क्या बनने के लिए, कौन सी लेवल पे आपको क्या डिजर्टेशन चाहिए, क्या आपकी बेसलाइन होनी चाहिए. अगैन दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन द HEC वेबसाइट. ऑल यू हैव टू डू इज टाइप इन HEC प्लेटफॉर्म एंड यू विल सी दिस. एक लेवल 1 है, ये सारे लेवल्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने करियर पाथ में कहाँ तक जाओगे. सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान का इस CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक्रेडिट करता है हम सबकी क्वालिफिकेशंस को, यानी हमारी पोस्ट MBBS हम क्या करना चाहते हैं. MBBS करने के बाद हमारे पास 2 पाथवे हैं. वन इज MCPS विच इज मेंबर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन एंड द अदर इज FCPS. MCPS का रोड मैप बहुत सिंपल है. CPSP 2 एयर्स क्वालिफिकेशन के ऊपर MCPS ग्रांट करता है. इसकी अच्छी बात क्या है, 22 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑफर है. इसके अंदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों सब्जेक्ट्स मौजूद हैं. यानी हो सकता है कि आप क्लिनिकल नहीं करना चाहते, आप एनाटमी में करना चाहते हैं, आप किसी और चीज़ में करना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल हैं. इसलिए पार्ट 1 मैंडेटरी नहीं है. दैट मीन्स यू डोंट हैव टू टेक अ एग्जाम टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग. दिस कैन बी स्टार्टेड विदाउट एन एग्जाम. आप 2 साल करते हैं, एक्रेडिट इंस्टीट्यूट से करते हैं, एग्जिट एग्जाम देते हैं जिसके अंदर एक थ्योरी पेपर होता है, जिसके अंदर होता है और आखिर में एक टॉक्स होता है. एंड यू कैन बिकम एन MCPS. MCPS करने के बाद आपके पास जो 2 पाथवे हैं वो है एग्जेम्पशन इनटू द FCPS विच इज़ अ हायर पाथवे, और बिकम अ स्पेशलिस्ट आफ्टर दिस. ये FCPS का रोड मैप है. ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसके बाद आप कंसल्टेंसी पाथवे पे आ जाते हैं. FCPS CPSP ऑफर करता है 46 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में. यू हैव टू क्लियर अ पार्ट 1, गेट इनटू अ रेजिडेंसी प्रोग्राम, स्टार्ट अ रेजिडेंसी प्रोग्राम. बिटवीन द फर्स्ट 2 years के बाद आपको MCPS देना होता है विच इज़ अ मिड लेवल एग्जाम. उसके बाद यू हैव टू सबमिट प्रीवियसली अ डिसर्टेशन. फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स यू हैव टू सबमिट अ रिसर्च पेपर. उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन करते हैं पार्ट 2 का एंड यू बिकम अ कंसल्टेंट. FCPS MCPS जर्नी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको आई थिंक जो एक चीज़ यूनानिमस थी थ्रू आउट ऑल करियर पाथवेज, इज प्लानिंग, कीपिंग योर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेट एंड फॉलोइंग योर गाइडलाइंस एंड टाइमलाइंस. सेकेंड फेलोशिप उन लोगों के लिए जो MBBS करके FCPS करके बाज ना आएँ और उनको और पढ़ने की चाह हो और अपने फील्ड के अंदर मज़ीद स्पेशलाइज करना चाहें, वो सेकेंड FCPS करते हैं. अगैन दिस इज़ विदाउट एन एंट्री लेवल एग्जाम. यू हैव टू क्लियर योर FCPS पार्ट 2 एंड देन यू गेट रजिस्टर्ड. यू डू, ये भी 39 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में CPSP ऑफर करता है एंड यू कैन do an exit exam after 2 publication and 2 to 3 years depending upon your speciality. Basic sciences की बात कर लेते हैं. MBBS कर लिया, क्लिनिकल में काम करने का दिल नहीं चाह रहा, पेशेंट इंटरेक्शन अच्छा नहीं लगता या नहीं कर पा रहे, यू बिकम अ बेसिक साइंस पर्सन. आप 16 years स्कूलिंग के बाद आप 4 years का पोस्ट HSC करते हैं, MBBS BDS ऑफ योर चॉइस में करते हैं. आप यूनिवर्सिटी लेड मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हैं, 2 years करते हैं और उसके बाद आप PhD कर सकते हैं. आप कहाँ हायर होंगे? यू कैन बी हायर्ड इनटू एनी बेसिक क्लिनिकल साइंस प्रोग्राम ऑफ एनी MBBS BDS यूनिवर्सिटी.
Medical education is another platform which has now opened when you have, you can become a medical educationist. Aapne MBBS kiya, BDS kiya, you do not want to do anything which has to do, you found your passion in education. एजुकेशन करने के लिए आपने क्या करना है, आप 2 साल का MCPS कर सकते हैं जो कि CPS भी ऑफर करती है. उसके अलावा you can go and do a master's and then followed by a PhD. Where will you be hired? By HEC. All universities जो MBBS और BDS कराती हैं, they are required to have a medical education department जो उनका overarching examination और curriculum देखता है. इसके लिए आपके पास जो 2 पाथवे हैं वो आप डायरेक्ट आफ्टर MBBS BDS कर सकते हैं, और अगर आप you find your passion after you have done your consultancy तो आप बाद में भी मास्टर्स कर सकते हैं. जो मिड लेवल डिप्लोमा, if you want to test waters, you want to find out कि हाँ ये एजुकेशन मेरे बस का गेम है कि नहीं, you do a CHP which is a certificate in health professional education. उसके बाद आपने MBBS किया but you don't think you can do a PG training, you want to diversify, then you have an administrative pathway with an MBBS background. You can do a MCPS in healthcare management, वो CPS भी offer करता है. Various MBAs are offered in sciences related to MBBS, that is healthcare management है, pathway of hospital management है, informatics है. ये again 2 to 3 years का MBA होता है, ये executive MBA होते हैं, तो evening classes भी available होती हैं. Public health is something which is new on the horizon in Pakistan. Public health के लिए MBBS के बाद अच्छी बात यह है कि आप directly आपका 2 साल का सिर्फ रह जाता है. Public health is basically dealing with issues related to public like vaccines and everything, and you have a very good chance of getting into an NGO or a public or a private sector hospital जो कि overarching देखता है सारी policies को. Again, this is a 2 years pathway. ये online courses भी available हैं, इसकी on-site courses भी available हैं, और उसके अंदर एक thesis होता है at the end which is needed to be done. इसके बाद आखिरी research pathway है. आपने MBBS किया and you do not find your niche and you think you're good with research, you can do a master's or even a diploma in clinical research by HEC. Now all the universities are required to have an office of research, innovation and commercialization, and you can be very well hired into that and pursue a PhD and a master's and later a PhD in statistics or epidemiology. So please don't waste away your MBBS qualification if you do not find a pathway which is a straight pathway. There are always other options which are available. Thank you.